All right, bhai log, I guess we are live. Yes, I am live. Why guess? So welcome back to you all. Even if no one is watching, welcome back. ठीक है, welcome back to no one, है ना? So before we begin, let us do the usual chore of sharing the link. We need to tell other people that we are live, है ना? And we need to boast about learning in public as well. So first I should share this video to the one who is concerned. I am live, but haven't I edited? Wait a minute. Wait a minute. I need to edit all of this. I actually edited it, but for some reason, it just reverted back to what it was in the previous video. Exploring the brave old world. Okay. Cool. I guess this much is enough. Let's make it redundant. So here, and what should I do? I should change the thumbnail before. Yeah, now it looks nice. So if I do a refresh on my phone, might. Okay, I didn't press the save button. No, it still did not appear to be changed. It is still not changed actually. YouTube kind of sucks. It's YouTube's fault. Okay, the thumbnail and the title both changed together now. Now I have to share the link to the people who are concerned as well as to the people who are not bothered about it. Oh, do I have one viewer? That's nice. If you are watching, then please, would you be so kind enough to do a live chat? Like, like type something on chat. There are no concurrent viewers. One might have tapped by mistake, or it is me only. Maybe.
Okay, I'm going to share this here, and I'm going to share the link to other platforms as well. But I don't want to save the post, I want to actually post it. अरे नहीं यार, I would have to share it again. So copy the link, switch to the live mode, and actually I don't want to copy the link, I want to simply, nice. Yes, this is enough. And now we are going to share the same post to the LinkedIn as well. I would explain it someday why I do this. Like, why do I do this? But it's not the time right now. Like, it's not the right time to explain it. Mm. So I'm going to close the useless windows. I'm going to keep it clean, keep it minimal so that we can focus on the actual thing. And before beginning with the actual stuff, I'm going to share the link to my personal group so that I can invite viewers from there as well. Hello. Nice. Okay. Shared on X and shared on LinkedIn, and I have nothing to do. I don't know why my video is lagging, because my video playback is lagging because I just fixed the bitrate issue with I just fixed the bitrate issue. I just toned down the bitrate, and I don't have any idea how my video looks. I would have to it looks fine. It looks fine. So let's open the terminal, start WSL. Okay, so what we are going to do in this video is that we are going to explore the world of WordPress, PHP, and WordPress extensions. Why we are doing this, I don't know. I just felt like doing it suddenly. I have been coming from a JavaScript front-end web development background. Okay? Like, I'm not a professional, but I have been doing front-end development, JavaScript, HTML, and CSS, and I think um, it is the reason due to which I lack some knowledge on the backend stuff. Okay? And I don't know how well does WordPress and PHP translates to providing me a backend knowledge, but we will still see if we can, gain some knowledge. And as well as, to be very honest, these new technologies such as Next.js, Django, and stuff, they are rising, and they have a rising number of user base. They have a good demand in the market, but the truth is that 77% of the website runs on PHP, and the WordPress is prevailing. It's still prevailing choice for content management systems. And
it's not obsolete, I would say. People have this misconception that it is obsolete. It just feels old and broken, and to the point that people might want to switch to new technology because there is so much ease and convenience. And imagine yourself that you have been imagine yourself as a new developer, okay, who hasn't landed a job yet, but if you no data, this stream will end shortly. Am I disconnected? Okay. So imagine yourself as a developer who hasn't landed a job yet. He's in a learning phase, and you might not able to realize how the old tech stuff works, because you know there are these new frameworks such as Next.js, Django, and Laravel. When you develop an application, you do not have to use an external web server to serve your pages. It's like they have this inbuilt test or development server, which is fine for most of the part. Like if I speak of Next.js, I would have never realized that you actually need a web server outside of the framework. It's like everything is managed by Next.js only itself. Okay, it is having a server which is going to serve you HTML, the templates which were written in React, and it's going to hydrate those templates with JavaScript. It's a lot of complex thing goes behind it, but at the same time it makes your development experience so smooth that you all you need to focus is on the actual logic that your app needs to perform. And same thing is with Django, although you have to use an extra language for the backend, the separate language for representing that logic, and the separate language for writing the backend code. But you can do most part you can do. If your website has no such dynamic components, you can do with Python and Django only, and all you need is to every time run a test or development server inside the program. So Django supplies that, but maybe if you just go above your like learning, if you just go one level above learning, then maybe there will be some point where you have to deploy an actual real life application, and there Django might need a separate web server. Like you might need a separate web server to deploy your Django application other than the built-in test server. So in short, what I wanted to say is that we lack the knowledge, or I lack the knowledge specifically of how a web server works, because I have been using tools such as React and Next.js, which don't give me the slightest idea of how it works, and how the and actually how the web crawlers works, stuff like that. So we are going to explore it today, and we are going to make ourselves comfortable with not comfortable, or make ourselves we are going to learn WordPress and PHP just enough so that we can navigate easily around PHP and its extensions. WordPress and its extensions. That's it. That's the goal for today. And actually, I would describe my goal later, my main goal later in this video, but
let's just begin with the installation of PHP and the WordPress. So when I was browsing for the articles to install WordPress, I like every one of them was suggesting that you just buy a web server online and then like hosting service online and then use WordPress. But we are not going to spend money for that, or we will try to install it in the local host only. So just installed the Apache server, and I installed the Apache server so far, and MariaDB and my SQL Secure installation, and I'm having problems with installing PHP um, it installs PHP installs, but the thing is that the first time when I was installing PHP I missed the configuration screen. Okay, it's basically a terminal UI configuration screen, which makes it pretty easy to connect your PHP to the web server and the local host. I don't know much about it, but I missed it, and now whenever I remove it and reinstall it, it just does not show me the it just doesn't show me the configuration screen again. So I only have one option: either do it manually by my own hand, okay, which is a little bit complex, editing the configuration file. I don't know if it is I don't know, like uh, it has several things which we don't understand, so it might be complex. And the this is the first option. Like, okay, first option will be removing the configuration file and then reinstalling the php so that the configuration TUI, terminal UI, will pop up. Okay, and we will configure the php correctly over there. If it does not happen, like even after removing the configuration file, it doesn't shows us the terminal UI, I will have to configure it by my hand only. And if it doesn't work out, if configuring it by hand doesn't work out or manually doesn't work out, then we would have a third option, is that I would create another WSL instance. I would create I would download another Ubuntu image for WSL, and then I would create and install all the tools again. So this time the third option is for sure going to help us, like it's going to work. The third option is going to work out, but it's going to take time. Okay, so let's begin with this stuff. Okay. So, before removing PHP my configuration. So it's usually in etc. भाई, I cannot the path for that. Configure inc php. नहीं तो
it inet 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 अरे नहीं यार, I don't, I just need this वाला IP. ठीक है, when I go to this IP I get to the home page of Apache server here. So Apache server is already running. Now I have to go to PHP my admin का configuration. So etc php my admin. For that I have to cd ls, अरे यार lsa etc file, etc I may find etc in the root na. So etc, sorry, cd this, ठीक है, and here do I have php my admin? ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे पता चलेगा etc, sorry, find etc php my admin. This one, found it. So what we are going to do is we configure db. What if I delete this entire, what files does it have? Like config.inc.php. What if I delete this entire folder? Descend into writer permission. Descend into write protected. अरे yes. Aha! Nice. Now what we are going to do is that we are going to cd back to home. Sorry, cd back to home, and we are going to install my admin again. अरे नहीं, we have to uninstall php my admin first. Something is off. Okay, we will try installing php. Okay, because it's showing that it is not installed, है ना? तो नहीं,
Not replacing deleted config file. Not replacing writing config to a not replacing a db config flashing administrative password. अरे नहीं यार, तो it does not show up here. क्या करना भाई, फिर क्या करना? I was so हाय विक्की भाई। चलो कोई तो आता है, कोई तो आता है भाई। थैंक यू विक्की भाई इधर रहने के लिए। विक्की भाई है अपने यहाँ पे। तो नहीं हुआ यार, पीएचपी में एडमिन का कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन नहीं आया। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? कॉन्फ़िगरेशन समझने का ऑप्शन, ठीक है। ये नहीं है प्लीज यार। ये सब क्या है भाई? कुछ भी है ये तो। ठीक है यार, आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम एंड टू डूइंग दिस अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज दैट आई डायरेक्टली स्किप टू द थर्ड स्टेप, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है? आई विल गो टू द स्टोर एंड what if I do this with Fedora? No, I won't do this with Fedora. And I don't want to risk the tools which I have installed inside this container. Yeah. Like my key will be lost. Let's say I can make multiple one, two WSL. Setting up multiple WSL distribution instances. Export Ubuntu tar, ठीक है। WSL export distribution name, export file name, export नहीं करना यार। export, why export?
Prepare your file system. क्या क्या चलो यार, इतना तो करना बनता ही है। नहीं, इतना तो करना बनता ही है। टर्मिनेट, import, update, user system, debug shell, shutdown, export, import, desktop, and purpose. अच्छा ठीक है, तो कंट्रोल पैन में, सॉरी, यू ubuntu and you uninstall it. Bye bye ubuntu, bye. नहीं हटा क्या? is being uninstalled. करने बेटा करने, अनइंस्टॉल होके चलने से थोड़ी ना चलना। आराम से। Not living their dreams. So do we have to? Ah. Oh my. And distribution is so it's already uninstalled. Nice. If I type Ubuntu, it's not there, so it's uninstalled. Great.
The program might not have run correctly. Windows subsystem or Linux run the program using compatibility setting this and I don't want to run that. ठीक है तो when I do WSL or list, sorry, double dash list, because double dash means extended list. The Windows subsystem has no distribution installed. Great. ठीक है तो Microsoft fixed that problem. I don't need this article now anymore. ठीक है and now I have to install a distro. So what I will do is WSL install Ubuntu. 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 No, that's the correct spelling now. सरकार तो साड़ी अपनी है. Oh, I don't mind. Oh, we have two viewers right now. We had two viewers. There is no concurrent viewer, but we had two viewers. That's progress. That's what we call progress. Cha. Go live, yaar. I am doing everything which I am sorry. I'm doing everything which I'm not supposed to. Okay, I'm doing nothing which I am supposed to. So from Monday it will be on full speed. Cut. We will be making projects on Next.js. Okay, and we will be applying the front end jobs. Okay, and we will not do anything other than that. Ubuntu has been installed. Launching Ubuntu, installing this may take a few minutes. मेरे भाई कोई आवाज नहीं आ रही. Do you want me to play some music? अच्छा, why am I? Whom am I asking? Uh, देख लो यार. Installation is successful. Nice. Now what I have to do is install my favorite package manager, update, and move on.
So, I suddenly realized something very important. It's, um, many people do not just land a development job for creating a project. It's that they land a development job for understanding the project and faking it that they created the project. And we know the reality that it takes, sometimes it takes months to create a scale of a project which we are faking. And but it's almost the same thing. If you can understand the source of the project line by line, it's like that you have created the project. If you have not created the project, but you do possess the sufficient skill and knowledge to create or recreate it. Even if you do not have the sufficient skills, after like after reading the source of one project, you can read the source of 2 to 3 projects, and then you will automatically be able to create one for yourself. Okay, one interesting project for yourself. So don't be shy about uh, don't be shy about reading source code of other people. It's just, it will help you. It will help you to understand the programming patterns which are over language, like which are not dependent much on the language of use. Okay, as well as the tools which are necessary to build most of the websites or applications. Oh, enough of the philosophy for now. Like, let's. Let's. अरे, I'm feeling very tired today. I don't know why. I am sleeping over. देखो, I'm sleeping over 10 hours daily, and still I'm feeling tired. I'm not even overeating. I'm walking. I'm doing physical activity as well, but I don't know why I feel very tired. And I don't want to feel tired while being bored. Maybe it's because of boredom. I don't. Oh. Okay, I think we are done installing Nala. We're done installing Nala. Oh, do PHP. Uh, Actually install Apache in, yeah.
It's running. We have successfully installed Apache, guys. Just to show you the proof of it that it's running, what we are going to do is that IPR. I don't remember the command of IP address. Yup, we got it. This is our LAN, na? Loop back 127. Whichever it is, we are going to try. ठीक है? Because try करने में क्या जा रहा है, guys? Try करते रहो. Yes. 2 मिनट, हाँ. Okay. ठीक है, तो now we need to install. No, install. सर्वर 910 सर्वर है ना. By the way, MariaDB is 90% of what my SQL is. So, like, I don't know. I actually don't know. I just heard it from internet folks that MariaDB is better. But why it is better, I just don't know. But it works at most of the places. Take care. So,
We are going to check if कुछ भी command. Again. Is enabled. So it will return enabled if it is enabled. Yes, it's enabled. The service is enabled. Not meant to start at boot. Okay, so why did I check if it is enabled? MariaDB will start at boot if it is enabled. Okay. Now, what I have to do, or what do I have to do? If not, sorry, and sorry, sorry, sorry. What was that? My secure MySQL secure installation or secure MySQL installation? What I need is something else. Okay, I don't need to install MySQL exactly. What I understand is that I need to install the security layer basically. Okay, I don't know what MySQL secure installation is. SQL secure installation. MySQL is installation security. This program enables you to improve the security of your MySQL installation in the following ways. You can set the password for the root. Okay. Good. So this guy is just is a security layer over the actual DB. Okay, so this is compatible with MariaDB. Actually, is it? My security installation. Yeah. Not a lot of the screen to join the documentation when sent to them.
Okay. MariaDB figure installation is for many reasons the existence of this concept is no longer apply in particular to MariaDB. Or this concept no longer apply in particular content. To create so there is no need to create a root password. MariaDB तो ठीक है तो I don't need to install MySQL secure installation ना ठीक है मैं नहीं कर रहा फिर let us just hope that we do not spoil anything in between. I'm going to jump directly to installing my PHP app. Before that we need to check if we are able to serve pages via Apache. So what I will do is where does okay cd I'm going to switch to root all has where does the PHP Apache lie var ww cd var ls okay here we are going to create a file ठीक है and in this file we are going to create a file and in this file we are going to post the information of PHP but first I have to install PHP because I haven't installed PHP yet. It's important ठीक है तो why have not I installed PHP? Oh okay ठीक है तो PHP Apache PHP live Apache PHP live Apache PHP oh so this stack is particularly called the lamp stack ठीक है I did not knew about this stack just like the MERN stack this particular stack is called the lamp stack but either ways you are going to use JavaScript so given to MERN stack this is all bullshit नहीं ऐसी बात नहीं है भाई MySQL secure installation will be asked मैं तो नहीं कर रहा MySQL server existing installing PHP live Apache mod 2 PHP encrypt PHP MySQL I'm going to install PHP MySQL not encrypt okay MySQL
रुको जरा, सबर करो। क्यों क्यों एनक्रिप्ट इंस्टॉल नहीं करना चाह रहा? उसके पीछे कारण भी तो होगा जो मुझे नहीं पता। ये देखो, creates an initial vector encrypt। क्या है बे? encrypt this was deprecated। ये this is an interface to the encrypt library which supports a wide variety of the block algorithms such as DES, blowfish, three-way। इन सब से अपन को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वैसे extension करते हैं। ले पाचे तो मिलेगा ही नहीं ना भाई, क्यों मिलेगा? वो तो मैं तो ऐसे ही डाल के रखा था नींद में भांग पी के। कौन व्यूअर्स कोई आए क्या? नहीं आए भाई। ओके, वी आर सो लोनली गाइस। हाउ मच impression do we have on X? How many impression, not how much. ये देखो, ऐसे ऐसे घटिया घटिया ये रिएक्ट एंगुलर न्यू। विच वन यू आर चूजिंग फॉर फ्रंट एंड? रिएक्ट एंगुलर, Vue.js, Next.js, as if you are comparing React to Next.js, है ना भाई? Sometimes, okay, do they really know that what they speak, what they are speaking, or what they are talking about, or what they are asking? Are they really aware of it? This guy here is legend. This guy here is legend, and I would respect that for him being a legend. ठीक है? He may sometimes, he may sometimes speak what he doesn't know, but for the most part, he will correct himself later, and you would not even realize that first, like when he was wrong, because it was too. I respect this guy. I genuinely respect this guy. He does not post some such things like React, Angular, Next.js, ऐसा ये सब बचकानी चीज है यार। ये है बंदा, ठीक है। This guy is next level. Work hard in silence, let your success make noise, learn in public. Ah. That's very important, भाई। That's very important. नहीं भाई, वर्क लाइफ इज इम्पोर्टेंट यार, इस पे तो मैं एग्री नहीं मारूंगा भाई, सॉरी। इस पे नहीं एग्री मार सकता भाई, प्रोडक्टिविटी बहुत गिर जाती है। PHP इंस्टॉल ना।
हाँ वी हैव PHP इंस्टॉल, ठीक है। अब तो फाड़ देंगे भाई, अब तो सिस्टम फाड़ देंगे। MKDIR तो नहीं होता, बनाने का टच होता है, टच। ठीक है, टच info.php। ठीक है, अभी तो मैं तुमको दिखाने आ रहा हूँ कि PHP में एक फंक्शन है, वो फंक्शन अगर तुम रन कर दो, इनबिल्ट फंक्शन है वो, तो वो PHP में पूरे मतलब उसका वर्जन में कौन सा SQL सपोर्टेड है, वो कौन सा JSON सपोर्ट करता है, सब सब कुछ आ जाएगा सब कुछ आ जाएगा उसमें। रुक जाओ, LS CD, सॉरी नॉट CD, नैनो है इसके अंदर, हाँ है। तो info डॉट, अच्छा तुम लोग ऐसा मत समझना कि मैं नैनो यूज कर रहा हूँ तो मतलब मैं किसी लायक नहीं हूँ, ठीक है। तुम लोगों को अगर किक विक चाहिए ना, रुक जाओ अभी, तुम लोगों को प्रूफ चाहिए कि मैं लेजेंडरी हूँ, मैं लेजेंडरी हूँ, अगर तुम लोगों को प्रूफ चाहिए तो ये लो, ठीक है। अब यहाँ पे तुम आई करोगे तो इंसर्ट मोड में चले जाओगे, और यहाँ पे व्हाट यू डू इज दैट यू टाइप PHP, फिर ये एंड कैसे करते हैं, PHP को ऐसे करते हैं ना, ऐसे ही था ना, रुक जा यार, ऐसे ही कुछ था यार PHP में। अरे भाई कुछ भी दिखा दो मुझे अपनी तसल्ली के लिए, हाँ ये ठीक है, कुछ नहीं चाहिए अब। तो ये देखो, ये फंक्शन है PHP का। अभी तो मैं तुम्हें विम दिखा रहा हूँ कि इंसर्ट मोड ना, PHP info, ठीक है, PHP info ही फंक्शन था। तो अब ना तुम लोग बोलो कि मुझे VI क्विट, अच्छा VI में एंटर तो मार गया, तुझे VI क्विट नहीं करना आता, ये लो भाई एस्केप दबाओ, ठीक है। अब इधर कोलन दबाओ जिसमें तुम कमांड मोड में आ जाओ, और फिर उसके बाद WQ दबा दो, सेव हो गया तुम्हारा काम, है ना। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा तो फिर ये लो देख लो, ठीक है। अब मुझसे बहस मत करना कि मेरे को नहीं आता VI, ठीक है, मैं हूँ लेजेंड बंदा, ठीक है। तुम कर लो अपना कोड वोड जितना भी, 2+2=4, वो कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, मेरे से कंप्लीट करके बता दो तुम लोग, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, ये तो अपन ने कर लिया, अपन ने। अब मैं दिखाता हूँ कि अगर वो मतलब अब जस्ट चेक कर रहे हैं कि वो सर्व कर रहा है कि नहीं, अपाचे सर्वर अपने पेजेस सर्व कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ आएंगे और अपन ने जो पेज डाला था ना उसमें लिखेंगे info.php, यही होगा। मैया हाथ में दर्द हो रहा है, आ गई इंफॉर्मेशन भाई। ये अभी अपन ने ये पूरा बनाया है, पता है, अपन ने बनाया है ये पूरा, अपन ने कुछ नहीं बनाया अपन ने। वो info.php वाला जो फंक्शन है ना, वो एको करता है बेसिकली ये पूरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, तो बेसिकली वो पूरा का पूरा वेब पेज ही एको कर दे रहा है एक तरीके से। और एको PHP में क्या होता है जनरली,
कि जब आप एको करते हो ना, तो एको इज द सेंस वो एच टी एम एल भी नहीं होगा, वो बेसिकली वेब ब्राउजर को स्ट्रिंग के फॉर्म में एच देगा। मतलब वेब ब्राउजर को उसने स्ट्रिंग के फॉर्म में पेज डंप कर दिया। अब वेब ब्राउजर की ड्यूटी है उस पेज को एच उस स्ट्रिंग में एच समझना और इस एच को रेंडर करना। तो एक तरीके से ये बहुत क्लोज हो गया जावास्क्रिप्ट की तरह। बट अब दिक्कत ये है कि इसमें वो नहीं है, डॉम वगैरह नहीं है पीएचपी में। तो पीएचपी बेसिकली एक रेंडर, मतलब एक होता है ना कि तुम्हारा ब्राउजर में जो इंजन समझ जा रहा है, ठीक है, पीएचपी बेसिकली तुम्हारा ब्राउजर इंजन पीएचपी नहीं समझ सकता। वो बस ऐसा कर सकता है कि वो उठा के अपना पीएचपी डंप कर सकता है सीधा तुम्हारे, मतलब अपना पीएचपी डंप नहीं करेगा, वो पूरा उठा के एचटीएमएल तुम्हारे पेज पे डंप कर देगा, ठीक है। यहाँ पे इंटरेक्टिविटी नहीं आ पाएगी जो जावास्क्रिप्ट में आती है, यानी कि तुमने वैल्यू लेकर भाई उसको कहीं भेज दिया या वैल्यू लेकर तुम उसको कहीं ले आए, ठीक है। तुम एक वो मतलब ये बॉक्स इधर हवर मारोगे तो ये बॉक्स इधर उधर झूलने लग जाएगा, वो वाली इंटरएक्टिविटी नहीं ला सकते तुम पीएचपी से। तुम सीधा टेम्पलेट डायरेक्टली सेंड कर सकते हो अपने वेब ब्राउजर पे, ऐसा होता है, ठीक है। कुछ लोग पीएचपी को सीजीआई फर्स्ट लैंग्वेज बोल देते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड पता नहीं क्या फर्स्ट, सीजी फर्स्ट लैंग्वेज बोल देते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है ऐसा क्यों होता है, पीएचपी सीजी फर्स्ट। when PHP was created, ठीक है, it is general purpose scripting language towards web development, was originally created by CGI, Common Gateway Interface. Sorry, fuck. Oh, sorry. मुझे भी नहीं पता था, अब पता चल गया। CGI मीन्स कॉमन गेटवे इंटरफेस, ठीक है। अरे रुक जाओ यार, CGI इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक्स, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, ठीक है। कॉमन गेटवे इंटरफेस और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। तो कॉमन गेटवे इंटरफेस प्राइमरी is written in the C programming language originally used for tracking and visitors. Visits to his online resume and he names. ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, पर्सनल होम पेज कैसे इवॉल्व हुई है भाई, कैसे इवॉल्व हुई है। अब क्या कहलाती है भाई वो, अब शायद दूसरा नाम पीएचपी दूसरा हो गया, प्री प्रोसेसर पता नहीं कुछ था ये। देखो बाहर मार्केट में ना बहुत चैट पीएचपी प्रोग्रामर्स बैठे हैं, ठीक है। उन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि जावास्क्रिप्ट क्या, मतलब उनको जावास्क्रिप्ट से मतलब तो है थोड़ा थोड़ा, लाइक इतना वो भाव नहीं देते। वो पीएचपी प्रोग्रामर सब उसमें कर लेते हैं भाई, पता नहीं क्या क्या तो बनाते रहते हैं, वही चैट बॉट वगैरह। चैट बॉट मतलब अब बाकी लैंग्वेजेस में भी इतना मुश्किल नहीं है चैट बॉट बनाना, लेकिन इतना हैवी काम करते हैं ना पीएचपी वाले लोग, ठीक है, और वो इतना सैटिस्फाइड भी रहते हैं। उनके पास जॉब्स की कमी नहीं है पीएचपी वालों की, सबसे पहले बात तो, लाइक मानो या ना मानो है तो भाई उनका सप्लाई और डिमांड बहुत कम है। सप्लाई और डिमांड रेशियो उनका बहुत कम है, इनफैक्ट 1 से लेस है सप्लाई ओवर डिमांड, ठीक है।
तो इसलिए बहुत खुश रहते हैं पीएचपी वाले। पीएचपी में ही पूरी जिंदगी कट जाएगी ऐसे। और लाइक अभी मुझे चांस मिला ना एक जगह, तो मैं भी शायद पीएचपी पे स्विच मार ही जाऊंगा। उस चीज के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। बट लाइक मेरा प्राइमरी कंसर्न अब वेब डेवलपमेंट नहीं रहा है। मतलब अभी तो मुझे इन केस अगर वो पीएचपी वाली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, पीएचपी वाली अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब तो मैं प्रॉपर बैक एंड गाय बन जाऊंगा। ठीक है, अगर पीएचपी वाली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो मैं अभी वेब डेवलपमेंट ही करता रहूंगा। और वेब डेवलपमेंट वाली अपॉर्चुनिटी अगर मुझे मिल गई कहीं से, तो फिर मैं उसके 1 साल बाद, मैं उसके 2 साल बाद वेब डेवलपमेंट छोड़ दूंगा और मैं फिर कंटिन्यू करूंगा। सॉरी, मैं फिर स्विच मारूंगा प्रॉपर बैकएंड डेवलपमेंट में, क्योंकि मुझे मतलब उस वाले बैकएंड डेवलपमेंट में नहीं, नोड वाले बैकएंड डेवलपमेंट में नहीं जाऊंगा मैं जाऊंगा ऐसे या तो रस्ट या तो गो या तो पाइथन वाले में। ठीक है, क्योंकि वहां पे मुझे मुझे लो लेवल में काम करना है। ऑल्दो पाइथन लो लेवल लैंग्वेज नहीं है, पाइथन के बहुत सारे एम्बेडेड यूज केसेस भी हैं जहाँ पे दे मेक कॉल्स टू सर्वर्स, मतलब रोबोटिक्स वगैरह ऐसी ऐसी चीज़ों में। तो मुझे थोड़ा हार्डवेयर साइड वगैरह में जाना है, और मैं वेब डेवलपमेंट सिर्फ अभी जॉब वगैरह के लिए देख रहा हूँ कि कहीं उसमें जॉब वगैरह मिल जाए। एनीवेज, अपन ने बहुत देखा। Yeah, we'll see lately. चलो यार, अब वो ऐसा स्टेप आएगा, दुख दुख होने लग जाएगी। मैं सोच रहा हूँ माई एसक्यूएल सिक्योर इंस्टॉलेशन करूँ कि नहीं करूँ। वो स्क्रिप्ट नॉइस सप्रेशन तो चालू है ना। ये दूरियां कुछ बता रहा हूँ। सोने जाना है यार, पता है बहुत भयंकर नींद आ रही है। बहुत भयंकर नींद आ रही है भाई। पता है, थक गया हूँ यार मैं। हाँ, मैं क्यों थका हूँ पता नहीं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन पहली बार देख रहा हूँ, स्टार्ट वर्चुअल कैमरा। इससे क्या होता है? प्रोग्राम आउटपुट सिलेक्शन, इस पे क्या होता है?
fade to color, fade and color side blue. Head transition, bleeding, scaling, vector, head color, rename, scale, blending mode, blending, RGB, laptop, multiple. इससे क्या हो रहा है? अच्छा वो ट्रांसपेरेंट टाइप हो गया। सॉरी 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 गाइस, सॉरी गाइस, अगर तुम लोगों को मेरी शक्ल अच्छे से नहीं दिख रही हो तो इस पे क्या होता है? ओ हो हो हो। Now we're thinking over it, like just how fast the night changes. Just how fast the night changes. क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? गायब हो गया मैं। डिलीट कर देता हूँ इस फोल्डर को। पता नहीं भाई, समझ ही नहीं आ रहा ये कलर कौन सा है। अगर मैं कलर सिलेक्ट भी मार देता हूँ तो वो गायब हो जाता है। उसको पूरी शक्ल मेरी ऐसी दिख रही है। अरे वही टेंशन क्यों ले रहा है? ये ले। अच्छा मैं वापस आ गया। दस That's improved. ये तो फेक ब्राइटनेस है। I'll keep it to 0. मेरे चेहरे में निखार आया। आ गया हल्का सा, कोई बात नहीं। ये
डीएक्टिवेट भाई। चलो अब मेन काम करते हैं, ठीक है। sudo nala install php my admin। इस बार we will pay attention to what's happening, ठीक है। सबसे अटेंशन पे रहना भाई। we must not miss the screen। प्लीज चूज द वेब सर्वर। कैसे करूं? शिफ्ट 8। हाँ तो कैसे करूं भाई? फर्स्ट वाला चाहिए। कॉन्फ़िगर पे configure my php my admin package। तुम न हो ना, मुझे तो ये वाला चाहिए। पर होता कैसे है मुझे? मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर मैंने तो सिलेक्ट किया था। हो गया। आई मीन हो गया, सही सही से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। PHP my admin package must have database installed and configured before it can be used। This can be used optionally handled with the db This can be optionally handled with db config common if you are an advanced database administrator and know that you want to perform this configuration manually, or if your database has already been installed and configured, you should refuse this option, and details on what needs to be shown। The PHP management plugin must have a database configured. This can be optionally handled if you are an advanced database, ठीक है। इसके जो भी था वो। We have to check if PHP admin is installed। नहीं होगा ना, because we have to restart the Apache web server।
interact with authentication policy. कैसे होता है यार? हाँ भाई, आलस आ रहा है। ठीक है, आ गया। सही चल रहा है, ठीक है। हो गया। नहीं हुआ। भाई इतनी मेहनत किस लिए गाइस? उस चीज को भी क्रिएट करने के लिए। देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। When there is a will, there is a way। ठीक है, अब मेरी विल है कि मैं PHP माई एडमिन चाहे कुछ भी हो जाए, माई एसक्यूएल के साथ, मतलब माई एसक्यूएल के साथ नहीं, मारिया डीबी के साथ चला के रहूंगा। ठीक है, देखते जाओ। मारियाना, मारियाना। स्टार्ट तो कर दिया था मैंने।
I don't know what a symbol link. I will understand it later. Enabling कर दिया. Yes. Just when I was about to give up. कुछ भी. Username BB, password BB. Cannot log into MySQL server. MySQL connection. अच्छा. Wait. Um, रुक जा. अभी तो मुझे जानना है स्टेटस. ठीक है. एक्टिव इनएक्टिव
It's still active. नहीं, it's not active. ठीक है, अभी तो अपाचे ही बंद है, तो मैंने बंद करके रखा है ना, बंद है, कुछ नहीं है वहां पे। ठीक है, now what I will do, MySQL secure install है। स्पेलिंग गलत लिखी है क्या? ऐसा ये स्क्रिप्ट पहले से इंस्टॉल होगी। Your current password for voters. Blank. Word readable photo. What I can do is
I can ask ChatGPT to chat me and help me in chat. Are, are they trying to copy Google Bard for the interface? Because the previous interface was nice, but this is too bland. Please don't copy Google Bard, yaar. Please don't. Like, do they have software? Like, do they have front end engineers setting in bulk? Ki bhai, her roles they are coming up with new AI. Sorry, new front end for the same AI again and again. It seems like you are encountering the access denied error while trying to access MariaDB. It could be due to the few errors. Incorrect root software, but maybe root password and get an access denied. वही कहीं ये तो नहीं है. User the warning border. As instructed कहाँ है in order to मैं तो एंटर ही दबा रहा हूँ ना. मैं तो एंटर ही दबा रहा हूँ. हाँ ठीक है. जा रे जा रे. Successfully use the password moving on. Okay, successfully use the password moving on. Setting the root password for or using the Unix software to ensure that nobody can developer authorize. You already have the root account protected, so okay. And you already have your root account protected, so you can safely answer. And by default, MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone to log into the MariaDB have a user account created for them. Having to have a user or account created for them. This is intended only for testing and making the installation go a bit smoother. You should remove them into the production environment, and normally root should only be allowed to connect from the local host, and this ensures that someone cannot guess at the root bus. This allows it to log in remotely. By default, MariaDB comes with a database named test. This allows the नहीं करना भाई. Reloading the privileges table will ensure that all the changes made so far will take effect immediately. Reload the done. Am I still on stream? Did anyone join?
We have a total of 2 users only. Sorry. Where where are where are our buddies? Where are our chuddy buddies? Sorry. Where are our chuddy buddies? Buddies, chuddies, chuddy buddies. Buddies and buddies with their chuddies. And everyone seems busy here. No point. चलो छोड़ो कोई बात नहीं. तो I'm feeling very sleepy at this point. What's up? Yeah, so let's continue with that. Where were we? We just completed the we just ran the my SQL secure installation na. So up now we will go to PHP. We will actually start the Apache server. So system. Start. So we started the Apache server and it loaded. Damn, pretty good. Now I have to go and see if PHP my admin is live or not. It's live, okay. And मेरे को नहीं पता what is the username, but I'll go and connect to that. अच्छा ठीक है. How about I do go? Right, type root and VB. Denied for root at localhost. Access denied for root at localhost. अच्छा क्यों? Why? Why though? Why भैया why? अच्छा why भैया? This is PHP. रियल कनेक्ट ठीक है. तो check MariaDB root user permission and ensure that you are using the correct username, that is root and password to connect to the MariaDB server. If you have changed the root password recently, ensure that you are check the host port. ठीक है, फिर उसके बाद ये is attempting to check the host port. Ensure that the PHP is attempted to connect the correct host, local host and port with the MariaDB. Where the MariaDB is verify user privilege. Make sure that the root users have the necessary privilege. Show grants for the root at localhost.
इससे क्या होता है? कैन नॉट फाइंड शो कमांड। ये ऐसे होगा ना, if I go access of BB at localhost is denied। अच्छा, ऐसा तो MySQL root। Let's check down our LinkedIn। भाई कोई तो भाव दो लिंक्डइन पे। ये मेरी इंटरेस्ट नहीं है, इसको हटाओ। फिनो कंट्रोल अनफॉलो। टॉप इंटरेस्ट, टॉप वॉइसेस। देखो दिखती तो सुंदर है पर कोई बात नहीं। आई मीन वो सही में दिखती सुंदर है पर मेरी इंटरेस्ट नहीं है वो। ठीक है। हाँ। आ, चलो यार, अब ऐसा लग रहा है कि ओके, वी नीड टू सेट अ टारगेट फॉर आवरसेल्फ। ठीक है। अभी what are we trying to do? What are we trying to do? We are trying to reset, we are trying to connect my php to mariadb। ठीक है। This is as simple as that। अब मुझे क्या करना है, मुझे वेज फिगर आउट करना है mariadb को कनेक्ट करने के। ठीक है। आई एम गोइंग टू क्लोज दीज विंडोज। ये हटा दो। ये वाला कौन सा विंडो है? हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो। इसको छोड़ दो और हटा दो। ठीक है। अब
ठीक है, क्लियर करो, ये सब क्लियर करो. आई नीड अ फ्रेश कन्वर्सेशन. सॉरी. इट्स डेफिनेटली ट्राइंग टू कॉपी बार्ड. ठीक है, ये देखो, ये कोने में देखो तुम, ये चले भाई अपने. हाउ टू ग्रांट. ये पूरा इसको समझ में आ जाएगा भाई. चल क्या रहा है बेसिकली, ये इसको समझ में आ जाएगा. अरे भैया बे. हाँ. It seems that we are encountering an access denied error while trying to already access denied. Access denied for the user. This is not have the necessary how to add users with privilege की स्पेलिंग भूल गया बे. GE. ठीक है. You need to log in as user with sufficient privileges and create. ठीक है. अच्छा ठीक है, रुक जाओ. अभी मैं sudo करा db करा वेलकम टू मारिया डीबी, है ना. अब फिर इसके बाद क्रिएट यूजर. पासवर्ड db कर दो. क्वेरी अफेक्टेड, रो अफेक्टेड. ठीक है. ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन. व्हाट डज दिस मीन्स. ठीक है. ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस फॉर द, पता नहीं वो क्या है पर स्टिल. ठीक है. ओके. क्वेरी अफेक्ट, 0 rows affected. Grant a select insert update. If you want to grant a specific privilege or limit them to specific database. ठीक है. नहीं 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 नहीं. I don't want to do that. Flush privileges. Flush privilege after getting granting image privileges. You need to flush the privilege to ensure that it takes effect immediately. And we are going to exit once. Exit the MariaDB shell. ठीक है. Bye. Thank you. And we are going to create db and go. Yes! 7 crore! 7 crore! 7 crore! भाई आज इतना टाइम लगा ना. टुडे वी टुक too much time. Next time we won't take that much time to set up all of this. ठीक है. It's easy. It's easy using GPT because GPT makes it easy. It's easy. ठीक है. Just copy paste. That's it. ठीक है. समझने की कोई जरूरत नहीं.
What happened? ठीक है, इसमें चेंज भी कर सकते हैं. ये ओरिजिनल थीम है, ये मेट्रो थीम है. ओए भाई, ओए भाई, डार्क थीम नहीं है क्या? भाई ये ओरिजिनल थीम लगती है, पता है. ठीक है भाई, ये भी ठीक है. हाँ तो now what is more important to us is finally wordpress. On localhost. जी ये चाहिए, ठीक है. आई एम कमिंग फ्रॉम आई एम गोइंग फॉर अ वाटर ब्रेक. ठीक है, और अभी रुक जाओ. ये वाटर ब्रेक के लिए नहीं जा रहा, मैं ड्रिंकिंग ब्रेक के लिए जा रहा. भाई ओनली 2 कॉन्करेंट व्यूज, पर कोई बात नहीं यार, किसी दिन अपना टाइम आएगा. अपन व्यूज के लिए ये सब काम नहीं करते. व्यूज तो अपने आप ही आएंगे. सॉरी. this There are many reasons that you might want to use local wordpress. It enables you to create a development site where you use for testing and experimenting, and this includes the WordPress will function as a staging site. WordPress will function as a staging site. This is popular option for the designer and the developers since you can detect the issue before the launch of your live application. Better yet, the local host enables you to work on your website even if you don't have the internet connection. Additionally, your local website provides a safe environment for trying things. Because this can prevent the downtime. Your live websites in the event that can change to introduce the breaks sometimes. फिर can you install WordPress locally on a new operating system? There are many platforms that enable to install WordPress locally, but XAMPP tends to be the most user friendly. ठीक है, what's more, XAMPP is open source free and it supports all operating systems including Mac, Windows, Linux. ये हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, XAMPP इंस्टॉल कर लो. ठीक है यार, एक्चुअली काश XAMPP कर लिया होता.
मैंने जैम्प क्यों नहीं किया? मैंने जैम्प क्यों नहीं किया? चलो, लेट्स डू द थिंग्स इन अ हार्ड वे. ठीक है, इन अ हार्ड वे. हार्ड. आखिर करना क्या चाहते हो? So we have a directory known as wordpress. ठीक है. मुझे नहीं पता कि what has happened. CHO and chow, chow, chow. What does that even mean? Chow. For now, I need to go to.
continue. Let's go. BB. The database server could be connected to, but the database could not be selected connected. On the same system. डेटाबेस सही तो है. ठुमक ठुमक. This is because PHP my admin is connected ना, तो PHP my admin को पहले लॉग आउट करना पड़ेगा. PHP my admin, इसको मैं करूँगा. देखो यहाँ से सेटिंग्स. अरे तो यहाँ से लॉग आउट करो, ठीक है. अब फिर उसके बाद जाओ यहाँ से वर्डप्रेस में. यहाँ से वर्डप्रेस में गए, इंग्लिश सिलेक्ट किया, कंटिन्यू किया. मैंने PHP माय एडमिन चलाया. The database server could be connected to, which means your username and password is okay, but the database could not be selected. Are you sure it exists? Does this have the in some other systems? If you do not know how to set up a database, contact your host. If all else, you may find at WordPress support forum. तुम मुझे क्या समझते हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुझे पता है मैं कौन हूँ? तुझे पता है?
तुझे पता है मैं कौन हूँ? ये क्या होता है? अरे इसको पता होगा ना। What is this? As to all databases and table, it's a wildcard notation that allows the specific how to list users and privilege. How to list user and privileges. Ledges. यार गलत बोल दी। प्रिविलेज की स्पेलिंग, प्रिविलेज की स्पेलिंग याद नहीं हो रही क्या? गधे, गधा। बीबी है लोकल होस्ट, ठीक है। शो ग्रांट लोकल होस्ट होस्ट नेम। शो ग्रांट्स और बीबी आठ 8 लोकल होस्ट, ये है ना। ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस है। एनक्रिप्ट करके रखे हो, मुझे नहीं बताओगे? हाँ, मुझे क्या समझ के रखा है तुमने? हाँ, हम्म, okay, we have got another.
All right, guys. I think today is the end of the stream. See, this is the end of the stream, and we are going to come back again with a live tomorrow. And tomorrow we will hopefully be. I will update you over this PHP wala thing. I will update you for that, or maybe I will do a live. I will do a live tonight only. Okay, I will do a live tonight only, where I will show you how to create a sample WordPress website where we can switch to the multiple versions of the site having multiple languages. Okay, so I am going to stop the stream for today and see you tonight.